Hello, Namaskar, Salam Alaikum, Sat Shri Akal. Once again, your own heart doctor, family doctor, cardiologist is with you, Dr. Kapoor. आज का, in fact, the topic I was thinking about the heart. So then something struck me because recently I came across some of the parents who were saying that their children are abusing, in fact, according to them only, alcohol. तो आज मैंने सोचा कि let me talk about the abuse drugs and heart. People think that the abuse drugs affect only the neurological system, anxiety, depression हो सकता है थोड़ा, irritability and all. But then, my dear friends, आज मैं especially इस topic में लेके आया हूँ, and my sincere advice to many parents, children, young people, youth across the population, that drugs of abuse really affect your system so badly and very seriously the heart also. In fact, we see a lot of patients with heart failure who have been affected because of these drugs of abuse जो होते हैं ना, commonly used drugs होते हैं, say alcohol है, smoking, tobacco, cannabis, hashish, methamphetamine, cocaine, angel dust, all this excitement drugs जिनको कहते हैं कि स्ट्रीट ड्रग्स अवेलेबल एवरीवेयर. तो आजकल दुनिया में इसका जो है ना चाल चलन एज ए फैशन स्टार्ट होता है एंड पीपल गेट यूज्ड टू इट, हैबिचुएटेड टू इट, एंड अल्टीमेटली दे लैंड अप इन एडिक्शन एंड दे ओवर यूज इट, and the end is very fatal almost always. I'm very serious about it. Unfortunately, I have to keep myself very serious. And I have to explain to everybody कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੋਬੈਕੋ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ. ਕਦੀ ਫਿਰ ਕੈਨੇਬਿਸ ਹੈਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਕੇਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. all these drugs of abuse, everybody knows it. तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ heart is one organ which I have seen many of them get affected. It can give rise to hypertension, it can give rise to blood crisis, hypertension crisis, heart failure, heart attack. And on top of that, I have seen, especially after binge drinking, Saturday night heart issues in the form of arrhythmia, palpitation. ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਡਨਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ, ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਗਿਡੀਨੈਸ, ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ. This is what is a very common presentation with a simple alcohol which we think, okay, we'll have a nice small 2-3 drinks in the weekend and relax. But mind it, this can take you to a serious situation in a hospital, very critical situation. You will end up with strokes even. तो क्या करता है कि अल्कोहल जब once you exceed a quantity, it directly affects many systems including liver and the hormonal system and stimulates the heart, neural electrical system, giving rise to what is a very common situation. बड़ी common situation हमें देखने को मिलती है. We have seen, हमने बहुत सारे केसेस देखा कि एकदम से palpitation होती है, ECG किया जाए तो irregular बिल्कुल बीट चल रही होती हैं और बहुत तेज चल रही होती है, 150, पौने 200 इस स्टेट पे वो लोग लेके आते हैं जब हमारे पास. तो the simple culprit is alcohol giving rise to what is called atrial fibrillation. सुना होगा बहुत कहते हैं fibrillation हो गया था, है ना, Saturday night drinks के बाद I had to go to hospital, we had to give injections, a lot of things. And even I have seen with intelligent, normal, professional people this happening. तो एक सिंपल एग्जांपल मैं अल्कोहल का दे रहा हूँ, which is a very common fashion to drink, especially the weekends. Tobacco, everybody knows. I have discussed in many of my presentations. We'll discuss later on also in a separate perspective, separate program, tobacco, how it affects the system. But the drugs of abuse are really cannabis, methamphetamine, ये जो होते हैं ना, सारे hashish, tetracycline, cocaine related heart attack I have seen myself in some of the patients who take heavy cocaine. And when they're smoking cocaine, suddenly the blood starts clotting in the arteries and they'll end up with heart attack. तो फिर डॉक्टर के पास जब इमरजेंसी में आते हैं तो वो सोचते हैं मैं इनको आर्टरी, आजकल देखा ना यंग पेशेंट में भी, यंग पीपल हैविंग हार्ट अटैक. वन ऑफ द रीजन इज दिस आल्सो, स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज where cocaine and all is so freely available.
बैक होम इन इंडिया में भी ऐसे बहुत केसेस देखने को मिलते हैं। तो मेरा आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने का रीज़न यही है कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एरिथमियाज, पैल्पिटेशन, जो फिब्रिलेशन या irregular heartbeats का one important reason is to use drugs of abuse for stimulation, getting rid of depression and anxiety. These are not the answers. These are not the answers for your anxiety, depression. Anxiety, depression can be treated without drugs also by just a social system of our fabric, social fabric, support system, counseling, many other methods. Don't go for drugs कि भाई एक दो कंपोज खा लेंगे, थोड़ा ड्रिंक ले लेंगे, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल हैव इवन मोर डिप्रेशन, मोर एंजाइटी। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ड्रग्स को लेने से पहले आप 10 बार सोचें, इवन डॉक्टर से पूछ लें कि भाई मुझे दवाई मिल गई, मैं ले लूँ। तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा व्हाट प्रॉपर डोज। और जब ड्रग्स ऑफ अब्यूज में जाए तो उसमें तो डॉक्टर कभी प्रिस्क्राइब करता नहीं है, ना वो एम्फेटामिन, ना ओपियम, ना कोकेन। ये ड्रग्स जो आते हैं ना, 8, 10, 12, 15 ड्रग्स हैं, वो कभी भी डॉक्टर एक्टेसी ड्रग्स या एंजल डस्ट कभी नहीं प्रिस्क्राइब करता है। मेडिसिनल ड्रग्स कभी कभी कहीं से मेडिसिन में यूज होते हैं, ऐसा नहीं है, बट देन ही विल नॉट प्रिस्क्राइब यू टू रिलीज योर डिप्रेशन, एंजाइटी। मेरा सबसे आपसे गुजारिश ये है कि ड्रग्स से दूर रहें। ड्रग्स और अब्यूज से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। कीप योर हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड कम back to us if you feel that you are taking drugs or any reason you want to support. We will refer you to psychiatrists. We will give you all the support. But please don't take any hard drug, any drug, which affects the heart, especially the drugs of abuse. Thank you so much. God bless you. Namaskar.